worthy resource person Dr. Jaspal Singh Barwal, Associate Professor, Director of Distance Education, University of Jammu, and all the delegates present in the virtual faculty development program on teacher education with reference to NEP 2020. I am pretty sure that your vast experience in the field of education will provide guidance and innovate ideas to upgrade our teaching skills and knowledge. Thank you. Let us pray to Almighty with Shabad. So, Madam Amal, please. जी मैम. Thank you. बोले सो निहार शिवा वर मोहित है शुभ कर मन ते कब हो न करो शिवा पर मोहित है शुभ कर मन ते कब हो न करो न करो और सो जब घायल इस अपनी जीत करो शिवा पर मोहे शिवा पर मोहे हर सिखों अपने ही मन को ऐलान छागुणता उजरो जब आपकी औज निधान बने अधीरण में तब झूठ मरो शिवा पर मोहित शुभ कर मन ते कब हो न करो न करो और सो जब जाए लड़ो इससे अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे तो प्रेम खिलन का जाओ सिर पर कली कली मोलियाओ मार्ग पैर धरी जय सिर दीजे कान की जय सिर दीजे कान की जय सुनिहार के शिवा पर मोहित है शुभ मन ते कब हो न करो शुभ मन अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे Thank you. Now I would like to request Dr. Balwinder Kaur, Vice Principal, SDS College of Education for Women, Lopa, to present report of the previous day. Over to you, Balwinder ma'am. Thank you, Dr. Raki. On 1st February 2020, 6th day of the FTP, the resource person Dr. Gaur Sharma, Science Master from Government Senior Secondary School Girls, Drolipai, Moga, he deliberated on the topic interlinking school education and teacher education. Dr. Sharma elaborated about the gap in teacher education that should cater to the needs of school education curriculum of teacher education should be in the line with school education, and this is the core aim of NEP 2020. Thank you.
Thank you, ma'am. Now I would like to request Dr. Tripta Parmar, Principal, Sandarbara Singh College of Education for Women, Lopo, for formal welcome to our resource person. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Rajan. I take it my prime privilege to welcome you all to the online 7-day faculty development program being organized by Sandarbara Singh College of Education for Women, Lopo, District Moga, in collaboration with ST College Hoshiarpur, Guru Ramdas College Jalalabad, Himalaya University Uttarakhand, Pace, Punjab chapter. I extend my warm welcome to today's resource person, Dr. Jaspal Singh Warwal, Associate Professor in Education, Directorate of Distance Education, University of Jammu. He is Coordinator, Learner Support Center, President Council for Teacher Education, J&K Chapter, Member Anti-Ragging Cell, University of Jammu, Member Campus Cultural Committee, University of Jammu, Member Campus Supports Committee, University of Jammu, Member Editorial Board of Researchers, J&K Multidisciplinary Committee. He is having 18 years teaching experience to his credit. He is proud author of 8 books. He frequently writes various articles and poems in national newspapers and journals. He has written study material for B.Ed, M.Ed and Bachelor of Arts classes. He has been supervising PhD and MPhil scholars. Today he will be deliberating on teacher education programs in distance mode. Most humbly, I request Dr. Jaspal Singh to share his views with the participants of this virtual FDP. So we are having validity session also today. So we will be having time up to 5 p.m. Thank you, Dr. Tripta. Respected जैतका सर और मेरे साथियों, कुछ लोग इसी कॉलेज से होंगे, कुछ लोग बाहर इंस्टीट्यूशन से होंगे। सबको नमस्कार। दोपहर की आज जो मेरा टॉपिक था जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, रिलेटेड है 2 हिस्सों में इसको हम बांटने वाले हैं। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रही है हमारी डिस्टेंस एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर, और दूसरा जो है एट प्रेजेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स उनको लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2-3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती टीचर को लेकर। पहले तो वो बोलती कि वो जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट वाला टीचर होना चाहिए। अब वो वैसा टीचर रिक्वायर्ड नहीं है हमारी कंट्री को कि जो कहे कि बस मुझे ये मेरा एरिया है वहीं तक मुझे काम करना है। अब जिसको मल्टीटास्कर बोलने लगे ना, वो कॉन्सेप्ट अब टीचिंग में आने लगा है, तो उसकी एक जरूरत है। वो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही कि वैसा होना चाहिए। फिर दूसरा वो बोल रही कि जो एजुकेशन हम देने वाले हैं वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी। माने कि अब हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि हम अपनी वैल्यूज को डिग्रेड होते हुए देखते चले जा रहे हैं, लगातार देखते चले जा रहे हैं। तो उस एरिया को बड़े ध्यान से इस पॉलिसी ने देखा है और उस पर स्ट्रेस किया है कि हम जो अभी एजुकेशन के लिए टीचर भी तैयार करेंगे और जो एजुकेशन हम देने वाले स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में वो वैल्यू बेस्ड अप्रोच वाली एजुकेशन होनी चाहिए। और तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी मिसिंग था, जिसको कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो वो इस पॉलिसी का एक कोर इशू है कि वो लाइफ स्किल ट्रेनिंग की बात करती कि वो एक ऐसे टीचर हमें चाहिए और ऐसी हम एजुकेशन चाहते हैं। अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, अगर हम इसको देखें हमारी इस पूरे ड्राफ्ट को और जो हमें अभी एक्सेप्ट कर लिया हम सब लोगों ने, उसमें जो 15.10 जो है जो पॉइंट है जिसपे हम टीचर एजुकेशन का जब हम चैप्टर देखते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है कि इन सर्विस टीचर्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये जो लोग डिस्टेंस में पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं वो उन लोगों को ट्रेन करता रहेगा जो अभी तक हमारे पास अनट्रेन्ड टीचर्स रहे हुए हैं। जैसे हम J&K की बात करें तो J&K में बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी अनट्रेन्ड टीचर की कैटेगरी में आ रहा है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने, जो हमारी J&K गवर्नमेंट है, कुछ उन्होंने भार डाला इग्नो के ऊपर, कुछ डाला नेशनल स्कूल ओपन स्कूल के ऊपर कि हमारे टीचर्स को ट्रेन करके दो।
तो वो अभी दोनों, जैसे हम ऐसा मानते हैं कि 20,000 के करीब ये अनट्रेन टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में काम कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट हम 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो JNK में काम करती है, एक जम्मू है और एक श्रीनगर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। दोनों में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स में B.Ed प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसी को हम, अगर टीचर एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि टीचर एजुकेशन में वेरियस प्रोग्राम्स हैं जो कि टीचर प्रिपरेशन का काम करते हैं। अगर हम एक लिस्ट देखें जो NCT की वेबसाइट पर है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें कोई अभी जो रिसेंट जो नया एक प्रोग्राम है उसको मिला के ये टोटल 15 ऐसे प्रोग्राम है जो टीचर एजुकेशन को के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। लेकिन उसमें जो हम जिनकी आज बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ कौन से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो वो लिस्टेड किए गए 9 नंबर और 10 नंबर पर। 9 नंबर पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइमरी और मिडिल टीचर्स को तैयार करने के लिए उन बॉडीज को रिकॉग्नाइज किया या उनके साथ लिस्टेड किए वो टीचर्स जिसको कि हम नेशनल ओपन स्कूल बोलते हैं। तो ये जो 9 नंबर दिया हुआ है कोर्स, इस कोर्स में है कि ये वो कोर्स है जिसको DELED बोलते हैं, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये 2 ईयर का डिप्लोमा है और ये डिस्टेंस एजुकेशन से हो रहा है और जिसको कि नेशनल ओपन स्कूल करवाता है। और इसके साथ साथ जो 10 नंबर पे प्रोग्राम है वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसको कि सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज जो डिस्टेंस में काम करती वो उसको चला रही हैं, जिसमें कि हम भी जम्मू यूनिवर्सिटी भी उसको इन सर्विस टीचर्स के लिए, जो लोग अभी स्कूल्स में काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अब ये जब डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में या कहीं भी दुनिया भर में, लोग उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि भाई ये बहुत क्वालिटी वाले प्रोग्राम शायद नहीं होंगे। आप लोगों को मालूम है कि जब ये कोविड आया तो सारी दुनिया जब चेंज कर रही थी, स्विच चेंज कर रही थी अपना, है ना, फेस टू फेस मोड से जब निकल के कहीं और मोड ढूंढने की तरफ थे, तो सबसे पहले निगाह सब लोगों की डिस्टेंस प्रोग्राम्स पर ही गई कि वो कैसे चला रहे हैं जबकि वो बच्चों से बहुत दूर होते हैं। तो सब लोगों ने, चाहे वो यूनिवर्सिटीज थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने फिर हमें स्टडी करना शुरू किया कि ये डिस्टेंस वाले जो लोग हैं ये कैसे इतने इतने बड़े नंबर बच्चों को कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, उनका सारा स्टडी मटेरियल कैसे रेडी करते हैं, फिर उन तक पहुंचते कैसे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि 5th जनरेशन जो डिस्टेंस एजुकेशन की काम कर रही, जिसको वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह बोला जा रहा था, वो हम लोग कर रहे थे काफी देर से। लेकिन हम पर बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां उठाते थे वो लोग जिनको हम बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट मानते हैं या रेगुलर मोड में काम करने वाले लोग मानते हैं। वो हमेशा से बोलते थे कि नहीं, डिस्टेंस मोड से जो पढ़ने वाला बच्चा है, वहाँ का जो सिस्टम है वो हमारे बराबर नहीं है। लेकिन कोविड ने ये सिखा दिया कि नहीं, एजुकेशन तो एजुकेशन है, वो फिर चाहे रेगुलर मोड से हो रही हो चाहे डिस्टेंस मोड से हो रही है। तो वो बहुत बड़ा फर्क अब लोगों की सोच में आना शुरू हुआ है। जैसे मेरा एक आर्टिकल भी लास्ट ईयर पब्लिश हुआ इसी के लिए कि कोविड में सब लोगों ने डिस्टेंस की तरफ भागना शुरू किया और देखा कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि कॉलेजेस में शायद पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनते होंगे, ये कोविड के बाद से लोगों ने बनाने सीखे, या ग्रुपिंग करना और वर्चुअल जाके उनकी हेल्प करना, ये इन्हीं कोविड में सीखा सारे इंस्टीट्यूशन ने। ये काम हम बहुत देर से कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन में। और वर्चुअल क्लासरूम, जैसे मेरे पास तो यहाँ 7 स्टडी सेंटर्स हैं, उनको 7 स्टडी सेंटर्स को मैं यहाँ जम्मू में बैठ कर मॉनिटरिंग करता हूँ। और मैं ये बहुत साल से कर रहा हूँ, अभी से नहीं कर रहा हूँ कि जैसे कोविड आया, उससे पहले से कर रहा हूँ। तो ये जो लोगों की धारणा थी ना कि ये कोई निम्न दर्जे का काम है डिस्टेंस का, या ये जो काम है वो बच्चों को कुछ लर्न नहीं करवा पाते, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बच्चा आता है वो अपनी मर्जी से पढ़ने के लिए आ रहा होता है। हम उसको फोर्सली किसी क्लास में नहीं डालते हैं, क्योंकि सिर्फ B.Ed को छोड़ के बाकी जो हमारे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, वो सारे ऑप्शनल होते हैं। बच्चा मर्जी है लगाए या ना लगाए। डिस्टेंस में जो B.Ed चलता है हमारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें हमने कंपल्सरी रखा हुआ है कि 80% अटेंडेंस जरूरी है, लेकिन बाकी कोर्सेज में नहीं है। तो देखो बच्चे कैसे अपनी मूड से आ रहे हैं, अपनी पेस से आ रहे हैं कि उन्होंने कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। वो अपने आप को इस तैयार करके आते हैं कि हमने पढ़ना है। तो हमारे पास, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ मौज मस्ती
कुछ और तरह के कुछ बातें सीखना वो नहीं आते हैं। तो हमारे पास सिर्फ लर्निंग के लिए बच्चे आते हैं। लेकिन इस पर भी बहुत बड़ा सवाल था। जब भी हमारा बच्चा किसी, जैसे मुझे याद आता है कि हमारे डिस्टेंस से एमएड जब बच्चे पास करके जाते थे, तो जब रेगुलर कॉलेजेस वाले या रेगुलर लोग जब उनकी इंटरव्यू किया करते थे किसी प्लेसमेंट के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, कहीं भी स्कूल के लिए, तो उनको पहला ही सवाल पूछा जाता था कि आपने बीएड या एमएड रेगुलर किया है, डिस्टेंस किया है? तो जैसे डिस्टेंस उनसे सुनते थे, तो वो जो एक्सपर्ट है उनका इरादा बदल जाता था कि नहीं, ये तो ऐसा ही होगा, इसके अंदर क्या, इसके पास कुछ नहीं होगा। और ये धारणा इन दिनों के अंदर लोगों में बदली, और अब वो देखने लगे कि नहीं, काफी बदलाव है, बहुत बदलाव है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस में बच्चे पढ़ के जाते हैं, वो डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं। और वो बेशक आप जैसे टीचिंग प्रैक्टिस की बात करते हो, है ना, इन स्कूल इंटर्नशिप की बात करते हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें कि एक्शन रिसर्च में जो लेना होता है, एक प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व करना है, वो आप मानोगे नहीं। हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे हैं, जब ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत बड़ी एक टीम है मेरे पास। तो वो जब सब मेरे साथ इन्वॉल्व होकर उन प्रोग्राम्स को करते हैं, तो वो कहीं बेहतर होते हैं दूसरे लोगों से भी। अगर हम यहाँ जब कॉलेजेस की बात करें, या जब टीचर एजुकेशन का वो बच्चा और हमारा डीडी का बच्चा खड़ा होता है, तो साफ फर्क झलक रहा होता है, क्योंकि वो सीख कर गया होता है यहाँ से, और उसने काफी जान मारी होती है। और जो हमारी फैकल्टी है या हमारे जो रिसोर्स पर्संस होते हैं, वो काफी उन पे अपना समय देते हैं और काफी उनको एनर्जी देते हैं। और हम हर सेमेस्टर में एक वर्कशॉप करवाने के बाद उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपका ये प्रोग्राम चलेगा। और जैसे आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम करवाते होगे फर्स्ट दिन, या जैसे मुझे याद है जैद का सर है यहाँ, तो हम ओरिएंटेशन करवाया करते थे 1 वीक की या 3 डेज की, बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्टिंग में। उसी तरह से हम डिस्टेंस में भी एक वर्कशॉप करवाते हैं किसी भी सेमेस्टर को स्टार्ट होने से पहले, और फिर वो बच्चे को गाइड किया जाता है कि आप ने करना क्या है और आप करोगे कैसे, आपको कहाँ से हेल्प मिलने वाली, वो सारा काम हम उनको उस तरह से देते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में ये धारणा, ये सोचना कि अब उस मेयार का काम नहीं हो रहा या उस मेयार के काम नहीं होते होंगे, तो वो अब लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। लेकिन अब जो मैं अब ये थोड़ी सी डिस्टेंस एजुकेशन की बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी और एरियाज हैं। जैसे हम उनको दूर दराज तक स्टेशंस कैसे देते हैं, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे J&K बहुत बड़ा स्टेट है, पहाड़ी क्षेत्र है, और हमारे पास हर रीजन का बच्चा होता है, उस रीजन के घर तक हमने पहुंचना होता है। जब वो, जैसे अभी डिस्टेंस एजुकेशन में आपको मालूम होगा शायद कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उसी में उसने टीचिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो उनको मॉनिटरिंग करना, उन तक रिसोर्स पहुंचाना, उन तक हेल्प पहुंचाना, और बहुत बार लोग इंस्पेक्टरी राज की तरह उन पे छापा मारने जाते हैं। लेकिन मैं जितने सालों से डिस्टेंस में काम कर रहा हूँ, मैं जब भी किसी बच्चे तक पहुंचाऊं, तो वो इस तरह से पहुंचाऊं कि उसको मुश्किल क्या है, क्या वो लेसन बनाने में, लिखने में, डिलीवर करने में उसको क्या मुश्किल आ सकती है, तो मैं उसकी हेल्प उस तरह से वहां तक पहुंचता हूँ। और फिर वो जो प्रोग्राम जहां भी कर रहा था उसको बड़े अच्छे ढंग से करता है। और ये मैं खुद बोल रहा हूँ, तो आपको शायद लग रहा होगा कि शायद सर ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक स्कूल के अंदर हमारे डिस्टेंस के बच्चे टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ एक तहसीलदार थी, एक लेडी तहसीलदार है, मैडम कोतवाल उनको बोलते, सपना कोतवाल। उन्होंने एक बार वहां से इंस्पेक्शन, किसी और काम से जा रहे थे, तो इंस्पेक्ट वैसे ही घुस गए कि ये स्कूल को भी मैं विजिट करती हूँ। वो देखने गई तो वहां देखा कि सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में टीचिंग एड लगाकर ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो उसने बोला कि इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको डॉक्टर जसपाल जम्मू यूनिवर्सिटी से करते हैं। उसने फटाफट उसी समय नंबर लिया उनसे और मुझे कॉल की कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ काम हो रहा है, और हमें किसी लेवल पे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर या किसी को मालूम हो। तो हमारे बच्चों को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनको वो बेहतर होते हैं वो कहीं भी करने के लिए। तो ये कुछ बातें डिस्टेंस एजुकेशन और उसमें काम करने वाले बच्चे और उस तरह का सारा है। और अब हम बात करते हैं जो अभी आज की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि उसमें टीचर एजुकेशन में क्या कुछ है और हम उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कैसा होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि हर स्टेज के लिए टीचर रिक्वायर्ड है कंट्री के लिए, और आने वाले दिनों में तो और भी बड़ी चैलेंज आने वाली है कि हम
क्योंकि फास्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी है, हम लोग बड़ी फास्ट चेंज होते जा रहे हैं, हमारे स्कूल सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं, न्यू जनरेशन्स के स्कूल्स अभी मार्केट में आ चुके हैं जिसको कि ब्लेंडेड लर्निंग के तौर पर या ब्लेंडेड मोड के तौर पर वो लोग पढ़ा रहे हैं, या कईयों ने तो बिल्कुल ही उसको वाईफाई जैसे जिनको कैंपसेस मिले हुए हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही गैजेट्स पर अपनी एजुकेशन लेके गए हुए हैं। जैसे अभी कल आज के बजट में आपने देखा होगा कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी आने वाली है, तो देखो हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं और हमारे टीचर्स वहाँ कहाँ स्टैंड करेंगे, और कैसे हम जो इंस्टीट्यूशन आप जैसे इंस्टीट्यूशन है या कोई और सिटीज में इंस्टीट्यूशन है या दूर दराज के, वो कैसे उन टीचर्स को ट्रेन करने में हेल्प कर पाएंगे। तो वो अभी हमारे सामने इस तरह के चैलेंजेस हैं, इस तरह के हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को कितनी जल्दी रेडी कर लें कि हम उन सारी ही स्टेजेस के टीचर्स को तैयार करने में हम अपनी स्टेट के या गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्कूल एजुकेशन की हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि हम सब लोग जानते हैं कि वो 4 स्टेजेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है स्कूल एजुकेशन में, उनके लिए उन स्टेजेस के लिए हम कैसे टीचर तैयार करेंगे। जैसे अभी तक आंगनवाड़ियों में जो अनट्रेन लोग ही काम कर रहे थे ना, प्री स्कूल्स में जो ऐसे लोग काम कर रहे थे, एक छोटा सा कहीं कहीं डिप्लोमा सुन लेते थे कि हम ईटीटी का डिप्लोमा कुछ लोग करके वहां लगते थे, लेकिन फिर भी हम मोस्टली देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर ये लोग अनट्रेन्ड ही उन बच्चों से डील कर रहे थे, जिन बच्चों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि स्पेशलाइज किस्म के लोग होने चाहिए, क्योंकि वो अभी स्टेज ऐसी है जिस स्टेज को समझने के वाले बच्चे हमें चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। हम उसमें ऐसे किसी को भी बिठा देते हैं, किसी भी इलाके के, मोस्टली होता क्या, सरपंच के नॉन है, इधर के नॉन है, उधर के नॉन, उसको आंगनवाड़ी में लगा दिया और वो बच्चे को केटर कर रहा है और देख रहा है। वो हमारी जो जनरेशन वहां से जब एंटर कर रही है इस सिस्टम के अंदर, वो बड़े स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए जो उनको कैटर करते हैं, उनको देखते हैं, उनके लिए जो सारा का सारा रिसोर्स तैयार करते हैं। और उसके लिए हम कॉलेजेस को, मुझे तो लगता है बहुत सारी वर्कशॉप करनी चाहिए कि हम कैसा वहाँ करिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें हम मॉड्यूल बना के दे सकते हैं उनको। मैं तो बोलता हूँ हमारे पास बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वुडन बॉक्सेस बनाते हैं, कुछ जैसे कारपेंट्री के को बच्चे बड़े शार्प बच्चे होते हैं, मेटल वर्कशॉप के नोइंग, जैसे अभी आपको मालूम है वोकेशनल आने वाली है, तो वो बच्चे हमारे पास बीएड कॉलेजेस में भी होते हैं। तो हम लोगों को ऐसे रिसोर्सेज के बनाकर उन प्रिपरेटरी जो, या जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोल रहे हैं, फाउंडेशन स्टेज के लिए बहुत सारे रिसोर्स करके, जैसे मेरी एक बच्ची अभी मेरे पास एक पीएचडी करने आई, मैंने उसको पहले से बोला कि आप फोकस करो इसी अर्ली चाइल्डहुड पर, और यहाँ जो हम कुछ डिजाइन कर पाए ना, कोई चीज हम कोई प्रोग्राम्स बना पाए, वो हम एनसीईआरटी को देंगे, और एनसीईआरटी फिर उसको, जो अभी एनसीएफ बन रहा है आपको मालूम होगा, जो कोशिश थी कि उनकी अभी 21 में बनता, लेकिन नहीं बन पाया, अभी 22 में वो आ रहा है जिसको हम एनसीएफ एससी बोल रहे हैं ना, स्कूल एजुकेशन का जो एनसीएफ बन रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो एनसीईआरटी बना रही है। लेकिन अभी भी जितनी इनपुट अच्छी जा सकती है जिस भी रीजन से, क्योंकि एक बात तो और हमारे सामने आने वाली है ना, कि हमें अब जो टीचर चाहिए होंगे वो लोकल नीड के टीचर चाहिए होंगे। अब बेशक कोई इंस्टीट्यूशन ये सोच रहा होगा कि मैं स्टेट लेवल के टीचर तैयार करने वाला हूँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितने कि अब उस लोकेलिटी के लिए जो टीचर आप तैयार करने वाले हो, वैसे इंस्टीट्यूशन की नीड जो है बहुत जल्दी आने वाली है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अब तो लैंग्वेजेस पर भी बहुत फ्रीडम मिल चुकी है, हम उसका रिसोर्स तैयार कर रहे हैं, मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, या अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं। तो वो लोकल नीड के ऊपर ये कि वहाँ के लोगों को कैसा टीचर चाहिए। जैसे हम आम, जब आप भी क्लास लेते होगे तो पढ़ाते होगे कि हर एक स्कूल की खुलने के पीछे एक फिलॉसफी रहती है, उस फिलॉसफी को केटर करने के लिए हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम बनाने वाले हैं। तो वो जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें 2 एरियाज हैं, जिसमें आंगनबाड़ी है और एक प्री स्कूल वाला है कॉन्सेप्ट है, जिसको हम पहले प्राइमरी कहा करते थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास, अब वहां उसके साथ क्लब कर दी गई है। तो उस ग्रुप के टीचर्स को तैयार करने के लिए अभी जो हमारा, क्योंकि जब तक एनसीएफ एससी नहीं आएगा ना, तब तक हमारा एनसीएफ टीई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो टीचर एजुकेशन का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि हम हमारे एनसीएफ एससी में टीचर कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन से करिकुलम नए ऐड हो रहे हैं, कौन से एरियाज नए ऐड हो रहे हैं, वो जो ऐड करेंगे एनसीईआरटी वाले, हमें उसी के हिसाब से टीचर तैयार करने होंगे आने वाले दिनों के अंदर। जैसे आप एक कंसेप्ट सुन रहे होगे,
वो एक कॉन्सेप्ट है कि सारी ही यूनिवर्सिटियों को, जितनी ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, उनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाना होगा। वो क्यों बनाना होगा कि अगर वो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या चाहे वो टेक्निकल कोई यूनिवर्सिटी है, एमबीबीएस को कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टेब्लिश करना होगा। उनका क्या काम होगा कि उसकी फील्ड के जो टीचर तैयार होने हैं कंट्री के लिए, अभी आपको बहुत वैरायटी ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है कंट्री के लिए, और वो जो टीचर तैयार होंगे वो ये लोग करेंगे। ये डिपार्टमेंट का जुम्मा होगा। जो भी जैसे हमारे यहाँ जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होगा। फिर वो जिसको हम 1 ईयर प्रोग्राम बोल रहे हैं ना, बीएड, वो उनके मास्टर डिग्री प्रोग्राम के साथ अटैच होगा। वो जो 1 ईयर प्रोग्राम है, वो जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम अभी लॉन्च होने वाला है, कुछ जगह पे हो चुका है, उसके साथ वो 1 ईयर का प्रोग्राम अटैच होगा, जिसको आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुन रहे होगे ना बार बार कि 3 तरह के प्रोग्राम्स अभी हमारे सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें कि 2 ईयर जो अभी हम चला रहे हैं, एक तो ये नजर आ रहा है, और एक 4 ईयर वाला जो अभी हमने जिसको मैंने लिस्टेड 15 पे बोला है कि वो अभी एनसीटी ने उसको इंक्लूड किया 15 पर। और एक और प्रोग्राम है जिसको हम 1 ईयर प्रोग्राम बार बार सुन रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन वो बड़ी दुविधा वाला प्रोग्राम है। कोई किसी तरह से उसको बोले जा रहा है, कोई किसी तरह से उसको समझाया जा रहा है। और कुछ लोग, जैसे अभी रिसेंट दिनों में एक बच्चा मेरे पास आया, बोलने लगा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी वो 1 ईयर वाला प्रोग्राम कब शुरू करेगी। मैं कहा तुमने क्या करना है? सर मैंने एमबीए किया हुआ है तो मुझे वो 1 ईयर वाला करना है। मैं कहा भाई ये प्रोग्राम ऐसे हवा में 1 ईयर प्रोग्राम नहीं आने वाला, ये इंटीग्रेटेड होगा किसी एक कोर्स के साथ, जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होगा उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। या अगर कोई 4 ईयर की जैसे कोर्स की हम बात करें ग्रेजुएशन वाला, उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। ये हवा में नहीं आएगा कि पहले किसी ने एक मास्टर डिग्री की थी, आज वो जाएगा वो किसी इंस्टीट्यूशन में घुस के वहां से 1 ईयर करेगा। वो रास्ता नहीं है। वो प्रोग्राम जो एट प्रेजेंट चल रहा होगा किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसके साथ वो क्लब होने वाला प्रोग्राम है, और उसको उन्होंने खुद ही डिजाइन करना है। एनसीटी ने उस पर बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि वो जो मान लो एग्रीकल्चर का टीचर कोई तैयार करना चाहता है, या कोई टेक्नोलॉजी का, जैसे यहाँ आईटी की यूनिवर्सिटीज हैं वो करना चाहते हैं, तो उनको फ्रीडम है कि वो अपना करिकुलम उसको डिजाइन करे अपने करिकुलम के साथ, और टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट लेकर, या उनकी जो मेथोडोलॉजी या उनके कंटेंट लेकर, या उनकी जो सारा वो इंटर्नशिप का काम या स्कूल इंटर्नशिप का काम या वो सारा लेकर वो लोग उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे, जैसे आपने और भी सुना होगा कि 2030 तक ये सारे इंस्टीट्यूशन जो 2 ईयर प्रोग्राम चला रहे हैं उनको धीरे धीरे बंद होना होगा, और वो दूसरा एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसको कि हम 4 ईयर बीएड प्रोग्राम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, वो रखना होगा। लेकिन इसके बीच में भी, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, 8 साल पड़े हमारे हाथ के अंदर, बहुत सारी चीजें और चेंज हो जाएंगी। क्योंकि जैसे इस पॉलिसी में लिखा भी गया है कि ये जो एनसीएफ आने वाला है, ये भी जो एनसीएफ टीई आएगा, टीचर एजुकेशन, ये भी 5 से 10 साल के बीच में रिविजिट किया जाएगा, और रिविजिट करने के बाद उसको रीडिजाइन, अपडेट, रीअपडेट, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो हो सकता है हमारे इन 10 सालों के अंदर पॉलिसी मेकर जब असेस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, या हम सब लोग भी देख रहे होंगे कि इन कोर्सेज के आगे निकलने वाला क्या है, हमारी कंट्री को कैसे और टीचर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से शायद हमें कुछ और डायरेक्शन की तरफ जाना पड़े या कुछ और रास्तों की तरफ जाना पड़े। तो उसके लिए फिर जो, जैसे हम बात कर रहे थे फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज के लिए भी टीचर चाहिए, जिसको हम पहले प्राइमरी तक का बात कर रहे थे ना, वो 5वीं तक। तो उस स्टेज में जो 3 साल है, उन 3 सालों वालों के लिए भी टीचर चाहिए। और फिर आगे जो आ गया हमारा मिडिल, जिसको हम पहले 8वीं तक मान रहे थे, जिसको बीच में हम एलिमेंट्री बोल रहे थे, अब उसको मिडिल स्टेज कहा जाने लगा है। तो मिडिल स्टेज के लोगों के लिए भी हमें टीचर चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैं डीएवी अबोर गया हुआ था, एमएड का वाई वाले ने, वहां मैं और ग्रोवर से डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारी टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज है ना, उन सबको खत्म करके ना सिर्फ एक ही नाम रखना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आगे प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, एलिमेंट्री स्टेज, ऐसा नाम दे दें। तो एक तो लोगों के दिमागों से वो हमारे जो बीएड को बांट दिया ना बहुत सारी जगह पे, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा अगर गवर्नमेंट कर पाए, या हम उनको कह पाए कि जितने भी तरह के टीचर एजुकेशन के बैचलर के प्रोग्राम्स है, उनका नाम एक ही होना चाहिए। नाम ऐसे जैसा बैचलर ऑफ एजुकेशन, आगे एलिमेंट्री स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, ऐसा करके रख के तो फिर हम करिकुलम डिजाइन करवाएं। और फिर वैसे तो कर रही है एनसीटी कर रही है, उसमें जो एनसीटीएफ बनने वाला है
21 वाला अब 22 हो चुका है। तो वो ऐसी जो चीजें निकल के आ रही है वो अच्छी है। जैसे एक और बहुत अच्छी बात निकली इन दिनों में डिस्कशन के अंदर आते आते कि ये जो टीचर एजुकेशन के साथ एक तो वो जो आप लिखा हुआ था हमारी पॉलिसी के अंदर ही कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो मोर देन 10,000 से ऊपर जो फ्री में डिग्रियां बांट रहे हैं। तो वो जो हमारी टीचर एजुकेशन पे धब्बा लगा दिया जस्टिस वर्मा कमीशन ने, उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा सब इंस्टीट्यूशंस को कि वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिखा हुआ है कि डिग्रियां बांट रहे हैं उस लाइन को निकाला जाए, क्योंकि वो हमारे इस कोर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से या जिस प्लेटफॉर्म से वो एनसीटी को या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जाना चाहिए कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से हमारे प्रोफेशन को इतना दो कि कुछ बुराइयां हैं हमारे सिस्टम में, फिर भी हमें ये जो है रिटन में नहीं यहाँ नजर आना चाहिए। वो हमारे टीचर एजुकेशन के लिए बहुत एक अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम सीटीएफ की बात करते हैं, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फाउंडेशन की, उसकी बात करते हैं, या और बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, वो लोगों को चाहिए कि वो लिखें वहाँ कि ये जो है इसको खत्म किया जाए, ये जो हमारे ऊपर धब्बा एक लगा है। लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, मैं बंद करने के लिए कभी भी नहीं बोलता किसी इंस्टीट्यूशन को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हैं, उसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हैं, हम सब लोग जो एकेडमिशियन है वो रास्ते जरूर ढूंढें कि उनको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे उनकी जो मुश्किलें हैं उनको दूर कर सकते हैं, उनके लिए वो रास्ता करना चाहिए। तो टीचर एजुकेशन में जितने भी लोग काम करते हैं और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होनी है अभी बहुत सारी चीजें, तो वहां तक सजेशन जरूर पहुंच जाए जिस जगह में ऐसी कोई हमें मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं। और एक और बात बीच में रह गई है मेरी जो कहने वाली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत बड़े नंबर में बात करने वाले हैं। तो हमारे जो टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी, वो लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वैसे टीचर तैयार कर सकें। तो अभी कंट्री में हमारे पास वैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर नहीं हैं, तो उनको तैयार करना भी हमारे ही का काम होना चाहिए। जिन लोगों जो लोग हमारे बीएड कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनको सबको कोशिश करनी चाहिए कि एक दो टीचर्स की ड्यूटी लगाओ, जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, वो भी अपने इंक्लूड करो अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो किसी सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। मुझे तो लगता है हफ्ते में एक दिन जरूर ये सारे टीचर बात करें इसके ऊपर, क्योंकि ये आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे स्कूल तो इंक्लूसिव हो जाएंगे, लेकिन इंक्लूसिव टीचर नहीं होंगे हमारे पास, स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं होंगे कि साइंस को इंक्लूसिव कैसे पढ़ाया जा सकता है ना, और मैथमेटिक्स को, लैंग्वेजेस को और दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे डील किया जा सकता है। तो उन मेथोडोलॉजीज की मतलब बहुत तरीके से बात होनी चाहिए, सब लोगों के साथ डिस्कस करके, जो जितनी ये आरसीआई वाले जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उन सब की हेल्प लेके अपने जो इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी हम बीएड करवा रहे हैं, एमएड करवा रहे हैं, वहाँ जरूर इसका हिस्सा होना चाहिए, ताकि हम वैसे जो टीचर तैयार कर सकें उन लोगों को जो आने वाली टाइम में हमारा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है वो। और थोड़ा मैं हमारी पीढ़ी और अगली पीढ़ी से हमें तो बहुत उम्मीद है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ जरूर जुड़े। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जब भी कोई मुश्किल आती है उसका हल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से मिलता है, और वो टेक्नोलॉजी की तरफ जरूर बढ़े। जैसे मुझे याद आता है कि जब मुझे बीएड प्रोग्राम दिया गया था 8-9 सेशन से, तो मैंने तब से सोचना शुरू किया कि मैं अब ये जो पहले हमारे ना जो लेसन मटेरियल हुआ करता था वो यहाँ से डाक में भेजा जाता था, फिर उसके बाद वो वापस आ जाता था, बच्चों को मिलता नहीं था, एड्रेस चेंज हो गए, वो मैंने खत्म किया। वो धीरे धीरे मैं इसको डिस्टेंस के अंदर जिस दिन बच्चे की एडमिशन होनी उसी दिन उसको स्टडी मटेरियल दे देना। फिर मैं अगली स्टेज तक गया कि उनको चिट्ठियां नहीं जाती थी यहाँ से, अब पहले चिट्ठियां जाती थी तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुंचती थी। फिर मैंने धीरे धीरे, पहले जब हमारे पास अभी व्हाट्सएप ग्रुपिंग नहीं आई थी तो मैंने उनको मैसेजिंग करनी शुरू की, जब मैसेजिंग बहुत बल्क में एक आदमी कर सकता था, ब्लॉक ऐप तो ज्यादा नहीं कर सकते हम, फिर वो मैंने मेथड यूज किया। फिर उसके बाद अगली स्टेज जब आई तो मैंने देखा कि अब व्हाट्सएप आ गया, लोग व्हाट्सएप पे तब सिर्फ पिक्चर ये भेज सकते थे, कोई फोटो वीडियोस वगैरह या बाकी चीजें तो बाद में आई। तो वो व्हाट्सएप मैंने शुरू किए मैसेजेस करना, जो मेरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ है या उधमपुर है या और इंटीरियर में किश्तवाड़ डोडा में जाना होता था,
वो अब मुझे बहुत इजी हो गया कि मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया करता था कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये काम है आप लोगों ने करना। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ो, उसकी हेल्प लो, अपने रास्ते आसान करने के लिए, अपनी टीचिंग आसान करने के लिए, अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए जो है उनकी जरूर हेल्प लेते रहो, ताकि आप अपने उस काम को अच्छी तरह से कर सको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस कॉलेज से मेरा बहुत लगाव है, लगाव इस कारण की मेरी धर्मपत्नी यहीं से पढ़ी हुई है। तो ये साल में 40-50 बार तो जरूर होगा उसको लेने के लिए। जब भी मैं खालसा कॉलेज बक्सर में पढ़ाता था तो वहाँ से फिर जाना पड़ता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, मैनेजमेंट का, आपके साथियों का, जो आप बहुत मतलब हम सुनते हैं कि कोई लोग सेवा करते हैं, तो असल में सेवा तो लोगों को लगता है कि कोई इस तरह से नहीं लेता कि कोई वहाँ से पैसा कमाया जाए, इस तरह से लेता है कि हम सबसे तक पहुँच सकते हैं, सेवा कैसे करते हैं। वो सेवा भावना के लिए आप बहुत नमन है, प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच जसपाल सर। आपने जैसे आपके लेक्चर में आपने बात की कि जो आने वाला समय है उसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन का बड़ा उठ के आ रहा है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होंगे वो हमारे जनरल स्कूल्स में ही होंगे। तो सर हमारे पास जो एक स्पेशल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट आता है उसको हमें आने वाले टाइम में कंपल्सरी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल और कंबाइन करने के साथ जैसे यूजीसी में पहले ये था ऑप्शन, जब मैंने करा था तो मैंने इसको पिक किया था। उसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, ऑर्थोपेडिकली जो होते हैं उन सबका थोड़ा सा बेस करवाते हैं। इतना आई थिंक सो कि हमारे टीचर को एक बेसिक नॉलेज के लिए तो उतना भी इनिशियल स्टेज पे चलेगा। हाँ। तो उसके लिए भी हम एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन को बीएड के एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाए आने वाले सिलेबस में। सर आपने बड़े ही विस्तृत तरीके से जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन में चल रहा है, हमने ये सोचा ही नहीं कि कोविड में हम डिस्टेंस एजुकेशन की तरह से हो गए। आज भी पता चला कि हम कोविड में डिस्टेंस एजुकेशन में चले गए। मेरे को बड़ी बार बच्चे आके पूछते थे, सर आज हुआ, उन्होंने हमें पूछा कि आप डिस्टेंस के बच्चे हो, तो हमें उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। तो फिर बड़ी पेन होती थी हमारे क्यों ऐसा किया जा रहा है। सर फर्क तो है, पंजाब में ये फर्क है। मैंने खुद से डिस्टेंस एजुकेशन में एमएड किया तो उसमें चलो सिलेक्शन के टाइम ये बात नहीं है, लेकिन हमारे कोलीग्स में कई बार होता था आप तो डिस्टेंस में पढ़े, आपको ये नहीं पता होगा, आपको वो नहीं पता होगा। वो थोड़ा सा फर्क तो है जो यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। Yes, over to Dr. Balwinder. Thank you, Dr. Satyanam. Thank you very much, sir. Thanks, sir, for such an elevating session very beautifully. You detailed about your teacher education programs in distance mode. Thanks for sharing words busy schedule. Your views will definitely helpful and for our participants. And sir, I'm really appreciate our participants will adopt your innovative ideas and they will upgrade their knowledge and their teaching and learning skills. And the other thing, sir, I'm just gonna say, everyone was talking about you, Jiswal sir, but first time I just listened to your lecture. And I was just feeling sitting at home and talking and discussing. I didn't feel any like formalities. I really enjoyed your lecture. Thank you so much, sir. And you just fully explained about that there are many programs for primary school teachers and middle schools and high schools. And there is many total 15 programs. So we can also discuss with you later on and we can adopt some ideas about that. Thank you very much, sir. That was really good. Thank you, sir. इन द मेन टाइम कोई पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरीज है, क्योंकि हमारा वैलिडिक्टरी सेशन शुरू होना 5 बजे, हमारे तो रिसोर्स पर्सन ने भी ज्वाइन भी नहीं किया वो वालों ने। तो इन द मेन टाइम कोई फीडबैक देना चाहे सर से, कोई क्वेरी हो। मुझे लगा कि 5 बजे तक नहीं, वैलिडिक्टरी वाले तो हैं सर, वो 5 बजे ज्वाइन करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, हम अपनी सेशन इंटरेक्टिव बनाते हैं सर। हाँ, कुछ सवाल ले लो और बात करते हैं। हाँ, किसी पार्टिसिपेंट्स कोई पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई सजेशन हो, क्योंकि हम इस एफडीपी के सजेशंस लिख के भेजने वाले हैं, एनसीटी को भी भेजने वाले हैं।
आप भी अपनी डेट लिखो वहाँ आपके यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हम भी लिख रहे हैं जल्दी JN के बाद। आप भी लिखो आपके यहाँ टीचर एजुकेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो विजिट करने आते हैं लोग टीचर एजुकेशन खास प्रोग्राम उनके पास फीडबैक उधर को लेके आते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट नहीं जानते। जैसे बहुत सारी विजिट्स होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं वो टीचर एजुकेशन रिलेटेड कम होते हैं। तो वो हमें फीडबैक जो उनको ठीक लग रही थी, जबकि हमें चाहिए हमारे सब्जेक्ट क्या फीडबैक है। तो वो अगर टीचर की यूनिवर्सिटी होगी वो लोग किया, और हमें सब लोगों को एफिलिएटेड उस यूनिवर्सिटी से कर देना चाहिए, टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। जितने भी हम बीएड कॉलेजेस में काम कर रहे होते हैं, तो हमें फीडबैक और फिर जो काम होगा वो शायद और बहुत बढ़िया होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी वैसी ओवरलोडेड हो चुकी हैं, वो अब इतने मल्टी जो कॉलेजेस हैं उनको देखकर मुझे लगता है सब हमारी जैसा ही आपका भी हाल होएगा कि बहुत चुका है। अब वो बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें हैंडल करना। तो वो उसके लिए मुझे लगता है एक टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट के पास जरूर होनी चाहिए। तो वो डिजिटल भी हो सकती है। हाँ, वो डिजिटल भी हो सकती है कि अगर हम उसको ऐसे लेके चले कि एक डिजिटल टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी फॉर स्टेट हो रही, जब स्टेट ना हो तो नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न वैसा ही हो जाए, स्टार्ट तो हो ही जाए ना। हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? आरती, यू वांट टू से? गुड इवनिंग सर। मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, नाउ आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। सर इकोइंग हो रहा है क्या? तृप्ता मैडम आपके वहाँ से यस सर। मैंने ज्वाइन किया था यही सोच के कि मुझे स्पेशल एजुकेशन में ही कुछ करना है, लेकिन हमारे कॉलेजेस के पास स्पेशल एजुकेशन के उससे कुछ वो नहीं था सर। आपको इंक्लूसिव सिर्फ पढ़ाया जाता है, हमारी एक बुक है जो हमको पढ़ाई जाती है, बट उसके अलावा ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोर्स या वो नहीं है। मेरा खुद का एक स्पेशल बच्चा है, तो मैंने एक्चुअली सच में इनरोल यही सोच के किया था कि फ्यूचर में मुझे डील करना आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं किसी की फ्लॉ, ये किसी की गलती नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है कि मतलब नहीं हो पाया सर। अब जब मैंने पीएचडी में अभी इनरोल मैंने किया है, 3.5 years कहते हैं कि मिनिमम टाइम आपको लगता है। अब अगर मैं इस स्टेज पे खड़े होके स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर या कुछ ऐसा सोचूं तो ये कितना रेलेवेंट होगा, कैसा, मतलब मैं इस स्टेज पे खड़े होके हाउ कैन आई कनेक्ट माय एजुकेशन विद माय विद माय सन बोलिए, या विद द स्पेशल एजुकेशन से मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ। और जो डिफिकल्टी मेरे साथ हुई, या आपने सही बोला था कि कोई ऐसा कोर्स हम अलग से दें, जब 4 साल का बीएड होने जा रहा है हमें पता है, तो कुछ ऐसा कि हम स्टूडेंट शुड हैव द फ्रीडम कि उसी में ही इनकलकेट हो जाए कि ओके वी आर डूइंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि देखिए मैंने किया, अभी मुझे ऐसा लग रहा है आई एम डायरेक्शनलेस, कंटिन्यूटी में कर तो लिया, बट अभी आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली आई एम गोइंग। जैसे आपके रीजन में रेखा ने अच्छा काम किया हुआ है, विकास की वाइफ ने, है ना, उसने स्पेशल बच्चों पे काम किया। मेरी एक स्कॉलर है, उसने अभी लास्ट ईयर पीएचडी सबमिशन और उसकी अवार्डेड हो गई, उसने इसी पे काम किया हुआ है। तो रेखा का काम भी बहुत अच्छा था। मेरी स्कॉलर का भी काम यूएस और बहुत दूर दूर तक गया। वो उसने भी यहाँ 3 स्कूलों के बच्चों को लिया जो कि ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन थे, और उन पर फिर वो एक वीक जाकर उन पर इंटरवेंशन करती थी, कुछ प्रोग्राम्स को बना के या हम डिस्कस करते थे, वो लेके जाती थी।
तो अभी मुझे जो लगता है, जैसे हमारा लोपों का कॉलेज है, लोपों के आसपास कोई 50 या 60 गांव होंगे, तो ये इन कॉलेज का या ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं उनका काम होना चाहिए कि उस इलाके के आइडेंटिफाई करें बच्चों को, वो बच्चों के ग्रुपिंग करें, उन ग्रुपिंग में कैसी हम इंटरवेंट कर सकते हैं, कैसे उनकी, क्योंकि बड़े शाई हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बड़ा हिच करते हैं कि मैं क्यों बताऊं मेरा बच्चा ऐसा है। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन तक जो है बड़ी सारी लर्निंग की चीजें उन तक पहुंचाई जाए। जैसे मुझे याद आता है, फाजिलका के पास एक ना स्कूल खोला था किसी टीचर ने, उसके खुद के घर के दोनों के बच्चों को वो बोल नहीं सकते थे, तो उसने फिर स्कूल तो किया बंद। उसने कहा जी पहले तो मैं अपने बच्चों को ही खड़ा करूं, फिर बाद में देखूंगा स्कूल होगा या नहीं होगा। तो उस बंदे ने 10 साल की एफर्ट के बाद अपने बच्चों को बोलना और सुनना सिखाया, और इतनी वो भाग दौड़ किया। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन का काम होता है वो करना। लेकिन पूरे देखें सिनारियो में तो हम सब लोग ना किसी भीड़ में तो भागे जा रहे हैं, पर कोई अचीव नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। तो हमारे इंस्टीट्यूशन का काम है कि अपने आसपास के 5 गांव ले लें, 2 गांव ले लें, वहां से आपको 10-20 बच्चे जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिन पर कि हमें थोड़ा सा, मतलब वीक में 1 घंटा या 2 घंटे कुछ हमारे टीचर्स का ग्रुप बनाकर, या जो हमारे पास पीपल टीचर आते हैं बीएड, उनको ले जाकर थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाए, तो एक तो हमारा एक डिफरेंट तरह का काम भी हो जाएगा और सोसाइटी में भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और उन बच्चों के पेरेंट्स में भी थोड़ा हौसला आना शुरू होगा कि हमारे बच्चे भी सोसाइटी का कुछ अच्छा मतलब रूप है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और आप जहाँ भी बैठे हो ना, बड़ी सारी चीजें हैं। मैं खैर अगर आप मैडम से मेरा नंबर ले सकते हो, मेरी स्कॉलर से आप जरूर बात करना, वो बहुत उसने मतलब उसके पास है। मैं सर यही आपसे अब अगला मैं यही बोलने वाली थी। आप मुझे क्योंकि मुझे अभी हम लोग शोध गंगा में सर्च कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपने मेरा रुझान इंक्लूजन की तरफ से ही है, बट टॉपिक अभी डिफाइन क्या होगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है ये। तो इसमें भी मैं कहाँ पे आऊंगी, क्या लूंगी, वो अभी सर करना बाकी है। बट मीनवाइल सर आपकी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने किया है, उनका अगर आईडी या नंबर या उनकी की हुई थीसिस हमें मिल जाए, और मैम भी जिस तरह से बता रही थी कि उन्होंने भी फील्ड में खोलोगे ना, तो वहाँ डॉक्टर जसपाल डालोगे, है ना, तो वो थीसिस सामने आ जाएगा एजुकेशन का। जब शोध गंगा आप खोलते हो ना, वहाँ सब्जेक्ट डालते हो, तो सब्जेक्ट्स में एजुकेशन पे क्लिक करोगे, तो अगर तो जम्मू यूनिवर्सिटी खोल लोगे तो यूनिवर्सिटीज के सारे थीसिस आ जाएंगे एजुकेशन के, उसके अंदर मेरा बच्चे का और मेरा भी होगा। अगर आप वहाँ एक कॉर्नर पे साइड पे ना एक होता है सर्च करने वाला, वहाँ अगर डॉक्टर जसपाल लिख दोगे तो उसके साथ भी मेरे 2 थीसिस वो निकल आएंगे सामने से। ठीक है सर। हाँ, बाकी और जो भी चाहिए होगा मदद वो मिल जाएगी। हेलो। हाँ जी, कौन बोलने वाला? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग sir. As we know कि we have not handled these kind of children in our career yet, but sir, what do you say कि like what will be the roles and responsibilities of the teacher for these kind of children? देखो ना, बहुत स्पेशलाइज्ड होना वो अलग बात है, एक जिसको ह्यूमन टच बोलना है ना, वो बहुत जरूरी है। जब तक किसी टीचर के अंदर वो फीलिंग नहीं है, फिर वो चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे डिसेबल बच्चा हो, उस तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके अंदर वो ह्यूमन फील नहीं है, आपको उसका दर्द नहीं समझ आता। मैं क्लास में हमेशा से बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह का सवाल करे, मैं उसको फेस करूंगा, मुझे पता है कि मैं उसको कैसे टैकल करूंगा। अगर उस सवाल को फेस ही नहीं करोगे, आप उसको मौका नहीं दे पा रहे, तो हम नहीं बात कर पाएंगे। ऐसे बच्चों की क्योंकि डिफरेंट तरह की डिफरेंट नीड्स होती हैं और डिफरेंट इम्पेयर्ड होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस बच्चे के साथ हम किस ढंग से बात कर सकते हैं। बहुत बार ना जिस घर में वो बच्चा रह रहा होता है, पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग ना मतलब जिसको चिढ़ चुके होते हैं, अकड़ चुके होते हैं, मैं इस बच्चे से डील करते करते, बहुत कम प्यार लोगों में होता है या रहता है। तो वो अगर जब कोई जो
जिसको बोलते हैं ना कि पहली बार कोई बंदा किसी से मिल रहा है, उसमें वो अफेक्शन फिर ढूंढना शुरू करते हैं कि शायद ये कुछ नया बंदा होगा या नई तरह से हमें बात करेगा। वो सोसाइटी के लोगों से, मैं तो इवन बोलता हूँ पेरेंट्स से भी तंग आ चुके होते हैं कि ये हमें इसी तरह से बात किए जा रहे हैं। वो जैसे हम पहले भी बात करते हैं, अपनी क्लास के अंदर भी बात करते हैं कि बच्चा डिफरेंट तरह से हमें देखता है और वो बार बार एक ही रिदम में देख रहा होता है, तो वो परेशान है। तो आप जब भी किसी ऐसे बच्चे से मिलोगे, पहले तो देखो कि है क्या वो, उसकी क्या है, किस स्पेशल किस एरिया का बच्चा है, तो उसको उस हिसाब से करके पहले ह्यूमन टच। अब अगर हम अगर बात भी करें ना, हम किसी पशु के साथ भी जब हम बात करें तो वो सीधे से हम बात, जब तक उसको पहले वो फील नहीं होगा कि मुझे प्यार करने वाला है, तो आपसे फिर वो डील करना शुरू करेगा। फिर आपको उसके साथ, मुझे लगता है 2 घंटे भी बैठोगे तो वो कम लगेंगे कि ये इतना वक्त निकल गया। तो पहला तो फील है ह्यूमन टच जो है, वो कहीं दोगे तो जाके कहीं बात बनेगी। Okay, right, sir. And sir, like for them, which kind of laboratory skills we need them for them? लेबोरेटरीज तो हमें चाहिए, उनको तो अभी बहुत लेट स्टेज में जाके लेबोरेटरी पड़ती है। पहले तो जिनको बोलते हैं ना डेली जो उनके काम है, उनमें कहीं वो फिट बैठ जाए, हमें लगने लगे कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है कि ये बच्चा अपने आप कर पा रहा है। छोटे छोटे काम, ड्रेस, अपना कपड़े पहनने से लेकर, अपने आप को साफ सुथरा रखने से लेकर, अपने खाने को ठीक से खा पाए, उसको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, उतना ट्रेन पहले इसको करना पड़ेगा। फिर लेबोरेटरीज और वो बाद की स्टेज है कि उनको फिर किसी लैंग्वेज लैब में लेके जाया जाए ताकि उनके वोकल ठीक हो जाए, वो सीख पाए या बोल पाए, वो बाद की स्टेजेस है। या फिर उसके बाद वोकेशन के जैसे कुछ बच्चों को होता है कि किसी काम का तो हमारा बच्चा बन जाए, वो फिर उसको घर के कुछ काम या घर का बिजनेस है तो उसके अंदर थोड़ा सा कोशिश करते हैं डाल के कि शायद ये इस तरह से चल जाए। वो फिर उसके लेटर स्टेजेस है जब उसको हम कोई वोकेशन सिखाने की तरफ जाते हैं। पहले तो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे हम जीते हैं, हमें कभी भी लगता नहीं है कि हम दरवाजा खोलते समय हमें मुश्किल आ सकती है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए वो सोचना, वो करना भी बड़ा टफ होता है। ओके बेसिकली तो इसमें ऐड कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगी मैम इसकी, फिर उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है कि पहले पेरेंट्स उसके आसपास के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि उसमें ये वीकनेस है। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग का शुरू होगा। वो जैसे सर ने बोला कि हमारी इनिशियल चीजें, पर्सनल हाइजीन हो गया, ड्रेसिंग, खाना पीना, वहां से फिर उसका करिकुलम डिसाइड करेगा कि ये इस तरह का बच्चा है, इसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है, इसको ये काम करवाए जा सकते हैं। वो चीज वो करिकुलम देगा, लास्ट वाला स्टेप तो जो है हमारे वाला। मेरे को लगता है स्पेशल एजुकेशन आज का जो है ना सबसे बड़ा मुद्दा आज के वेबिनार में ये निकल के आया है कि स्पेशल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। जिन लोगों को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो हम आपने जो सजेशन दिया ना उसको हम तो 100% करेंगे। हमारे आसपास वाले एरिया में हम आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे 5-10 जितने भी बच्चे हों, उसमें हमारा कोई थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगना है। हमने वो पीपल टीचर्स को दे देने हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनको बुला के थोड़ा सा उनके साथ हम शुरू करेंगे इस प्रैक्टिस को, और कुछ कर सकें आपके इंस्पिरेशन से। ये तो हमने आज सीखा सर। थैंक यू सो मच सर। हम इतना सा भी अच्छा कर पाए ना तो ये एफडीपी का बहुत मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है कि हम वेलफेयर का एक काम सीख गए हैं। हमेशा से ये लगता है कि हम चीजें नहीं ढूंढते, वो ढूंढ रहे हैं, हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं विशाल जी? आप बिल्कुल बढ़िया, मैं आप सुनाइए। बस सब अच्छा है, सब ठीक है। मैडम माइक बंद है आपका। सॉरी सर। Thank you, Jaspal sir, and welcome, Professor Manoj ji. Welcome to the 7th-day online workshop for the Faculty Development Program. Now over to Dr. Balwinder Kaur or Dr. Rakhi. Thank you, Jaspal sir. It was really very wonderful and interactive session, and we were very curious to listen you for the past many times, as in
Thanks for sparing time for us. And now I welcome Dr. Manoj Saxena ji, who have joined us and spare time for us for today's session. Now I invite Dr. Tripta Parmar, Principal, Sandarbara Singh College of Education for Women Lopo, for formal welcome of our resource person, Dr. Saxena ji. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Rakhi. Once again, I very humbly welcome our resource person in the valedictory session, Professor Manoj Kumar Saxena. I take this very honored moment to introduce such an experienced person to the participants of this FDP program, Professor Manoj Kumar Saxena. Currently working as Professor of Education, is also Campus Coordinator of Dhauladhar Campus 1 of Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, HP. He is also Honorary Director of OER Cell of Central University Himachal Pradesh. He has worked as Dean School of Education and Head Department of Teacher Education for almost 2 terms of 3 years each. He was also Honorary Director of Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra for almost 4 years. He is working as teacher educator for the last 24 years. He has worked as member coordinator and chairman of NEP peer team, member visiting team of NCT, and also member of UGC expert committee. His areas of specialization and interest include ICT in education, teacher education, tribal education, and environmental education. Under his supervision, 8 research scholars have completed their doctoral research, and at present, 8 research scholars are pursuing their doctoral research under his guidance. He is also guiding 1 post-doctoral fellow. He is a reviewer of prestigious journals of SAGE and Springer Nature. He was member of Executive Council and chairman of School Board and convener, Board of Studies in Education at Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. He is also member of Academic Council of Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. He has completed ICSSR funded National Study as Research Supervisor for Himachal Pradesh. He has also completed another independent project from ICSSR New Delhi and awarded a project from Commonwealth Educational Media Center for Asia to develop OER content at PG level. Apart from these academic ventures, he has been decorated as President Scout by His Excellency the President of India in 1988. He is recipient of Rotary International Rotary Youth Leadership Award in 1989. He has been conferred with Excellent Teacher Award 2021 by Sociological Society Himachal Pradesh. He has to his credit 9 books and 95 research papers and articles published in journals of national and international repute. He has presented and contributed 78 papers in various national and international level seminars and conferences in India and abroad. He has delivered keynote addresses, valedictory addresses, and special lectures in various international and national seminars in different states of India. He has worked as resource person for different organizations in various states of India. He has organized several international and national conferences so far. He is life member of various associations related to teacher education in India. Today, he will be deliberating upon challenges in implementation of National Education Policy 2020 in higher education. I most humbly invite Dr. Saxena to deliver his address to the participants of this FDP. Over to you, sir. Thank you very much, Madam, for introducing me with the learned audience. Good evening, all. The course convener and principal, Sardar Darbara Singh College of Education for Women, Dr. Tripta Parmar, my friend, Dr. Jaspal Singh Barbal, all the learned colleagues from the college and the distinguished participants who joined us across the nation, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate to Internal Quality Assurance Cell, Sardar Darbara Singh College of Education for Women, for organizing this online faculty development program on this very important theme.
have been asked to share my views about challenges in implementing the recommendations of National Education Policy 2020 in higher education with the learned participants. As we all know that 29th July 2020 is very much important date in the history of India in the second decade of this 21st century. Because on this day, the country got its national education policy after almost 34 years. This policy has a long-term goal to make several changes in Indian education system from school to higher education level. This is the first national education policy of 21st century, which has replaced the 34 years old National Education Policy of 1986, and it has included various reforms to make Indian education system more contemporary and more skill-oriented. After getting the approval from Union Cabinet, it is a third major revamp in Indian education system. Before this policy, the country has seen the National Education Policy of 1968 during the tenure of Mrs. Indira Gandhi and another during the tenure of Mr. Rajiv Gandhi in 1986. If we talk about the history of National Education Policy 2020, I'm talking about only quoted National Education Policy 2020. Before getting the nod of Union Cabinet, this policy has crossed a long way. If we go in the initial stage of this policy, we will find that in January 2015, the consultation process was initiated for formulation of new education policy during Madam Smriti Irani's tenure of HRD Minister. On 31st October 2015, a committee was constituted under the chairmanship of Shri T.S.R. Subramaniam for the evaluation of new education policy, and the committee submitted its report to the ministry on 27th May 2016. We know that this report was not accepted as draft NEP, but even then it was uploaded in public domain for some inputs for new education policy. Now we will see how new education policy became national education policy. On 24 June 2017, a committee was constituted to draft the education policy under the chairmanship of on 27th, you know that on 24 June 17, a committee was constituted to draft the education policy under the chairmanship of former ISRO chief, Dr. K. Kasturirangan, and it was the tenure of Shri Prakash Javadekar as HRD Minister. On 31st May 2019, the Kasturirangan committee had submitted its report to the ministry, and this was the tenure of another HRD Minister, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. So the policy from new education policy to national education policy has seen the tenure of three different Minister of Education, Human Resource Development. The draft NEP was again uploaded on the then MHRD website to get the suggestions from various stakeholders. And this is the only policy for which the discussions were made from Panchayat to Parliament, from Gram Pradhan to Prime Minister, from students to guardian, from poor people to industrialists. And you will be surprised to know, after receiving almost 2.25 lakhs of suggestions and comments, discussions on the important issues with the state education secretaries, with the Central Advisory Board on Education, and meeting of department-related Parliamentary Standing Committee of Human Resource Development, the policy finally got approved by Union Cabinet on 29 July 2020, which was chaired by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. After getting the approval of, Union Cabinet,
This draft, mind it, this draft new education policy became National Education Policy 2020. And this policy aims to make India a global knowledge superpower. It is a very comprehensive policy document which includes all the deprived groups who were not included in the mainstream till now. In the coming times, all the groups which were left unattended will come into the mainstream by taking the benefits of this national education policy. This policy gives a direction to make India a knowledgeable society with the help of more holistic, multidisciplinary, and bringing out the distinct capabilities in each student. You know that this policy is not a law. It is only a policy document. And this policy document will give direction to the Indian education system for coming many decades. And to implement various aspects of this policy, the government has to pass various acts. Because you know that if you have to implement the recommendations, you must have some acts also with you. You know that this policy is presented into 4 parts. The first part of the policy deals with school education. Under this section of the policy, it has suggested many changes at school level to promote overall learning and well-being. In this section, it talks about the early childhood care and education. In earlier policy, you might be remembering, the young child from age of 3 to 6 years were not covered. This policy has included the children from the age group of 3 to 6 years and integrates the Anganwadis into the school complexes. And you might be heard yesterday's the finance minister's budget speech there. She told that some of the Anganwadis will be upgraded. So this part also covered this section on foundational literacy and numeracy, curtailing dropout rates, curriculum and pedagogy in schools, teachers, equitable and inclusive education, efficient resourcing and governance through school complexes, standard setting and accreditation for school education. This is the first part of the policy. Second part is deals with the higher education. Under this part, the policy discusses the present drawback in higher education and provides suggestions for improvement in the field of higher education. And I will be focusing on this part only. The third part of NEP constitutes recommendations on different topics such as professional education, adult education, the lifelong learning, online and digital education, promotion of Indian languages, arts and culture, online and digital education. And the fourth part of this policy deals with the issues of its implementation, where we will get the challenges. We have to face the challenges to implement. And such implements will require multiple initiatives and actions, which will have to be taken by multiple bodies in a synchronized and systematic manner. You know that in the series of implementation of the recommendations of NEP, the Union government is proactive. And it is a welcome move of the Union Cabinet to renaming the Ministry of Human Resource Development to Ministry of Education within a month of approval of NEP by Union Cabinet. You see that with the approval of the central government, the UGC on 28 July 2021 has issued a Gazette notification regarding very important academic bank of credits. And this regulation is called the University Grants Commission, Establishment and Operations of Academic Bank of Credits in Higher Education, Regulation 2021. And you will be surprised to know there are some lacuna on this regulation. So UGC has to take first amendment in this regulation, and it was published in the Gazette of India on 28th December 2021 recently, and which was circulated by UGC through its letter to the Vice Chancellor of all universities and the principals of all autonomous colleges in the country very recently on 12th of January 2022. UGC has also issued the guidelines for multiple entry and exit in academic programs offered in higher education institutions on 29 July
2021 as the first anniversary of our this National Education Policy 2020. We know that the great Vivekananda was the view that the education should develop the intellect, build the character strong, and make the learner self-reliant. This policy also lays emphasis on these issues and talks about the holistic development of the learner and multidisciplinary education. You know that the education should not only make the learners of strong character, moral, logical, physical, and emotional, but also make them employable. And you see that here, employability does not mean that the learner should have the capabilities of getting salaried employment. Employability means that the learner may be able to start its own enterprises and give employment to others also. Because if we'll have some entrepreneurs, we'll have to some job providers, then this policy will work, certainly. Education should have the aim to develop such citizens who should be attached with their roots. Certainly, we have to focus on this also. They should know their cultural heritage, and whatever is good in Indian culture, they should know. You see that many of the children of our country do not know much about the country's diversity and different cultures. Many of the people we have seen, they have never came out from their district even. If you see here, I visited one place is there, Pangi Valley in Himachal Pradesh. I visited there in reference to one of my project. I have seen so many people are there, those who have never came out from the valley. So if they will not come out from the valley, it means that is the whole world for them. They do not know even about the country's diversity. So I'm talking about the children. Many of the children of our country do not know much about country's diversity and different cultures. They do not know about many of the great personalities of our country. Therefore, it is a very high time when they should be made aware about the diversity of the country and cultures. They should be reconnected with their roots. Many times we see that our children go overseas countries to abroad, and the poor parents die here. You might be heard about a lady in Mumbai died in her flat, and after almost 3 months, only scandal when the smell came out from the flat, only then the people, the neighbors came to know that the lady is no more. So you see that if our children will not be connected to the roots, how they will come back. So my point of is that the children should be reconnected to their roots. They must be familiar about the country, and the children should be sent for educational tours in different parts of the country. Suppose the student of my university would go to Amritsar, go to Bagha border, they will certainly know about their culture. They must be knowing about the how the retreat ceremony is being organized by the BSF and other paramilitary forces. So they must know, and you see that whenever they will go to see the culture, to study the culture, to see the different part of the country, by that activity, they will not only be familiar to the country, but it will boost the economy of that part of the country. Because if you see, our student will go, suppose my student will go to Punjab. So certainly, if they visit any place, suppose they wish to visit Darbar Sahib. If they'll go to the Darbar Sahib, they need the transportation there. They need the accommodation there. They need food there. Certainly, it would give rise to the employment opportunities for the people of that particular part of the country. If students will connect it to their roots in their home country, certainly after taking good education, the children will not try to give services in the country,
in the countries other than our country. And certainly, if they will be connected to their roots, it's my belief, rather it's our belief, that they will not go to serve the other countries. If you see, in US, most of the Indians are there. In Canada, most of the families, most of the persons from your own state are there. So if they will serve to our country, certainly it will boost the economy, and certainly it would be a great help to our nation. Further, the policy emphasized that all these standalone institutions will be closed in phased manner, and they will be converted, or they have to be converted, into multidisciplinary higher education institutions. This policy also gives a reform about complex nomenclature of higher education institutions like deemed to be universities, affiliating universities, technical affiliating universities, unitary universities. All these should be converted to universities. If the main point is, if they fulfill the norms, then they will be converted to the university instead of deemed to be universities or affiliating universities. The policy also stated that very important recommendation of this policy, that all the fresh PhD entrants, irrespective of their disciplines, will be required to take credit-based courses in teaching, education, pedagogy, writing related to their chosen field during their doctoral training period. Exposure to pedagogical practices, designing curriculum, credible evaluation systems, communication, and so on will be ensured, since many research scholars will go on to become faculty of their chosen discipline. If you see, I believe that the participants are from the teacher education college, might be some from other colleges, other field also. You see, if a person just passed out from his or her master's, and then the policy further emphasized that a national mission for mentoring. Why I am talking to you? Because these are the areas where we have to face some challenges to implement these policies. I have talked about the 4-year integrated B.Ed program. There are some challenges in that program also. I'm talking about national mission for mentoring. This policy emphasized that it should be established, a national mission for mentoring, with a large pool of outstanding senior or retired faculty, including those with the ability to teach in Indian languages, who would be willing to provide short and long-term mentoring, professional support to university, colleges, and teachers. You see, for this type of mentoring, some of the training programs have already been conducted by some of the NITTR. You are very much knowing about NITR Chandigarh, NITR Chennai. They have identified some of the senior teachers from different universities and colleges, and they have offered training to them. I was also a part of this kind of training. I was the member participant for this type of training at NITR Chandigarh. So they have started to work on this issue also. So you know that higher education plays an important role in improving the quality of life. The main objective is to fully channelize India's human resource potential in higher education sector with equity and inclusiveness. The education enables the students to expand their knowledge, skills, sharpen their skills, expressing their thoughts clearly, grasping new concepts, theories, and increase understanding of the world in an effective way. You know that NEP has suggested several changes in current higher education system. Like, a target has to be set to increase gross enrollment ratio in higher educational institutions. It was in 26.3 in 2018. They are supposed to raise it up to 50%. Multiple entry and exit system have been adopted in the undergraduate courses, under which the students in the undergraduate program of 3 to 4 or 4 years will be able to lead the course at multiple levels, and they will be awarded the undergraduate degree, diploma, or degree
accordingly. So yes, it is a very good initiative of the government. It's very good recommendation of NEP, but it has also some challenges which we have to face. It should be established for storing academic credits earned by the students. So allowing foreign entry of foreign universities, students and faculty mobility by doing internationalization of education. So you see that these are all are very, very good initiatives recommended by NEP. But as we all know that every coin has two faces. One is brighter, another one is darker. So we have discussed about brighter side of NEP. Now I'll discuss some of the challenges, and those challenges are very important challenges. Basic infrastructure. You see that creation of new infrastructure it's a big challenge where a huge amount is to be invested, and a lot of time will be required for implementation. You see, it is a Herculean task to work on the infrastructure to build quality higher education institutions in India. You see that lack of good infrastructure leads to poor quality of education. You see, if you want that education should be of high quality, you must have the resources. You must have the what I say smart classroom. You must be there in your some recording facility for video lectures supposed to be there, because you see that many places it has been seen it has been recommended that during this pandemic time, if you see, we have some hybrid learnings models we have used some blended learning mode, but you see that for those purpose we need the infrastructure. From where we will get the infrastructure? From we will get the funds. If it is we talk about the universities, government funded universities, if we talk about the government funded colleges, they may generate the funds, they may get the funds from the government, but what about the private players? From where they will get the funds? So this is important to know, to focus on this issue, that we need the basic infrastructure. That would be the good one. Another bigger challenge is before us is bachelor's degree with honors or research. Why I am saying this is a challenge? Because you see, in my university we have implemented various recommendations of National Education Policy, and I was very much involved in those recommendations and those implementation of the policy recommendation. You see that an individual seeking admission to bachelor's degree with honors and research, it is presumed that she has normally completed all the requirements of a 3 years bachelor degree. But here it is a catch. It is very fascinating. We all know that, now this is the 4-year degree program. So we'll get the PhD, the degree, bachelor's degree with honors or bachelor's degree with research. But there is a catch. If you go go through the multiple entry and exit guidelines issued by UGC, you'll find that for the 4th year of degree program, the student must have to secure a minimum of 7.5 CGPA up to 3rd year. Only then he or she can pursue the degree with research or honors. Now, you see, at this junction, the student has to decide whether he has to go for bachelor's degree with research or bachelor's degree with the honors. But the condition is there that only if he or she has secured 7.5 CGPA up to 3rd year. So only then he has to go for research degree or honors degree. And he has to decide. But if you come to the another side of the table where the university authorities are there, you see the universities, those have to finalize the curriculum for this program. 2 types of problem these type of universities will face. We have also faced such type of problem. You have to design the course for honors as well as research domain, where it is clear recommendation that if a student completes a rigorous research project in the major area of study,
be awarded degree with research. It means that you have to give a rigorous research project to that candidate in the 4th year. This is about the degree with research. But there are no guidelines about bachelor's degree with honors. Very clearly mentioned about the research that he or she has to have the rigorous research in his major area. But what about the honors? It is to be decided by the higher education institutions that how it will distinguish the bachelor's degree with research and bachelor degree with honors. Because what you will teach in the honors, you have the guidelines about the research degree, but no guidelines are there for degree with honors. So it has to be decided by the university. So it's a kind of challenge which the universities are facing, an absence of any guidelines for honors degree. Another point of concern is that guidelines for multiple entry and exit issued by UGC depicts that the students who have completed a 4-year bachelor's degree with research or honors may take admission in 1-year master's degree. But at the same time, it recommends that the student who has 3 years bachelor's degree may get admission in the 2-year master's degree program. Now the question, very important question arises, that 2 students took admission in the first semester of bachelor's degree program. Just think over the situation, how we are facing the challenges. 2 students, X and Y, took admission in first semester of bachelor's degree, first year. After 3 years, Y secured 7.5 CGPA and he wishes to go for the degree with research. And another boy or another candidate, X, he could not secure 7.5 and he secured 7.4. So that boy or that candidate is what I say is compulsorily have to have the exit after 3 years. So the thing is, the boy who got 7.5 is now pursuing degree with research, but the poor X who has not secured 7.5, he secured 7.4. So he has to take compulsory exit from bachelor's degree program with simple bachelor's degree. And the policy, the guidelines says that if he wants to pursue the higher education, he may go for master's 2 year. Now you see, Y is in 4th year of bachelor's degree, X is in first year of 2 years master's degree. Both are pursuing 4th year of their higher education. Now what happens? The boy Y who took admission in 4th year, now he qualified for the bachelor's degree with research and he wished to pursue the master's program. And the avenue is there for 1-year master's program. You see that X, the Y who took admission in 4th year, now he is in first year in the 1-year master's program. Here the boy X who was compulsory exited from the course, now he is also in the 2nd year of master's program. Both are same time they are pursuing, both are pursuing 5th year of their higher education. So it's very you see that it is very ironical that he got 7.4, he has to compulsorily exit from bachelor's program. Another one got 7.5, he is pursuing the 4th year of bachelor's degree. Both candidates came out from masters after completing the Y completed 1-year masters, X completed 2 years masters, and both these students came out with the masters at the same time. So my point is, now both these students will pass out at the same time with same credential and both will be eligible for getting admission in PhD program.
So then it is very, very disheartening that a student who could not meet the requirements of bachelor's degree with research is now at par with the student who was qualified for bachelor's degree with research or honors. So it is beyond imagination that why this exercise has been done. So on this front, the UGC has to think over, because it is a very, very big challenge before us, and even they are just segregated two students because of only 0.1 CGPA. So UGC has to think over this issue. Now I'll talk about the concern for teacher education. Madam, have I time for speak some more time? Sir, how much time do you need more? I think 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Sir, our chief guest, Professor J.P. Bajoria ji, Vice Chancellor from Himalaya University, has joined the session, sir. Okay, which university? Sir, Himalaya University, Uttarakhand. Himalayan University. Okay. So quickly, give the highlights. You give quickly. I will just. You see that I'll try to sum up within 5 to 10 minutes. The 4-year integrated B.Ed offered by multidisciplinary higher education institutions will become a minimal degree qualification for school teachers by 2030. So you see that what will happen to those who will be having the 1-year B.Ed or 2-year B.Ed, how they will get absorbed for the job. So this is also a very important point to focus on this, what will happen for those students also. One more point is important, that what I say that I have talked about that the PhD entrants should have the training, or they have to have some credit course of teacher education. So, but it is not mentioned that how those multidisciplinary higher education institutions will meet this requirement who do not have the Department of Teacher Education. So this is also a point of concern. How they will, either they have to establish, first they have to establish the Department of Teacher Education, only then they can offer this type of course, or they have to have they have to have the collaboration with other universities where the Department of Education exists. But the thing is, again, there is no mention about what kind of support will be given to the Faculty of Education to hold this, that this type of additional responsibility. There is no mention. I have talked about the National Mission for Mentoring. It is to be established, and I told you people that it will have the large pool of outstanding senior or retired teachers, but it is not clear that these senior teachers will from education department or from any discipline. One more thing, that it has to be the standalone higher education institutions will be closed in phased manner, and they will be converted into multidisciplinary higher education institutions. And the same case is with the standalone teacher education institutions. Either they have to convert them into multidisciplinary institutions to run 4-year B.Ed program, and you see that they are supposed to have simultaneously offer 2-year and 1-year B.Ed program. But there is no clear-cut instruction that what type of support they will be provided to convert them into the multidisciplinary institutions. Policy recommended that 4-year integrated B.Ed will be a dual major holistic bachelor's degree in education as well as a specialized subject. But again, it is not clear whether a 4-year integrated B.Ed degree holder will be at par with a 4-year graduation degree holders. You see, will a 4-year integrated B.Ed degree holder be eligible to take admission in master's program of his choice? I mean, that a student who passed other subjects related to graduation other than education courses under 4-year B.Ed integrated program.
will be eligible to take admission in master's program in those courses which he has passed under 4-year B.Ed program. Suppose his major, dual major, we are talking about, it is a dual major degree. There he has studied history. Will he be able or eligible to pursue MA in history? It's very important point. It is to be taken care of. That it should be also given to the our students also, B.Ed students also, they will get this type of facility also, that they will pursue the masters in their own field. If we talk about the academic bank of credits, you see higher education institutions have to establish or as far as academic bank of credit is concerned, the academic bank will be established, credit bank will be established for each and every student, where he or she may store his credits earned by him or her from recognized higher education institutions in digital forms. So you see what I say, this kind of academic bank, it is like your bank account where you deposit your hard-earned money and you can withdraw the money from the account and the balance will be reduced by the same amount. In the same case of academic bank of credit, the student will store the credits, earn credit, and when the student requires to redeem these credits for certification, the earned credits will be reduced from the total earned credit. Like if he is pursuing 4-year degree, bachelor's degree, after 2 years, let me clear and let me clarify here that all these students who wish to get exit, they may exit at the end of even semesters. After 1 year, after 2 years, after 3 years. Means after 2 semesters, 4 semesters, 6 semesters. And they can re-enter only in the odd semesters, means 3rd semester, 5th semester, and 7th semester. And same is the case with the master's program. You see that the master's program, case of master's program, the only 2-year master degree programs, students will have the exit after 2 semesters. But in case of 1-year master's degree, there is no multi-entry, multi-exit, because it is only a 2-semester course, so they have to be there. So I told you that the amendment has also, one amendment has UGC also made in the academic bank of credits, so that now every university, earlier only those universities who are NEP graded or who are having the 100 NIRF or 1000 word ranking, only they were eligible to get admission, to get registered with academic bank of credit. But by this, this amendment the UGC has made, all the universities and autonomous colleges are eligible now to get registered in academic bank of credit. So the faculty members and students should be trained in using academic bank of credit facility, because it's not very easy that the students can get registered. Because if we have to register our student for academic bank as a university, first we have to register with academic bank of credit portal. Only then our students can be admitted. It is a lengthy process. So such type of process, for such type of process, there should be one training also there. It is also, so these are some challenges which create hindrances in implementation of recommendations of national education policy, which need immediate attention. I earlier told you that my university implemented 50% recommendations of NEP, and anyone is interested to see how we are implementing the recommendations of NEP, the person can visit our site cuhimachal.ac.in. I'll share the link in the chat box, so directly you can go. If you are interested, you directly can go to that file and you will find these recommendations. So now I conclude with the hope that these important points must be addressed and all the recommendations of national education policy will be implemented soon in letter and spirit, by which the future of our students will be brighter and the nation would become a knowledge superpower which will lead the world as it was during the Nalanda times. At the end, I appreciate your patience to listen me, and once again,
My sincere thanks to the organizers, especially Dr. Tripta Parmar, the principal of the college, to invite me to share my views with you all. Thank you very much. Thank you so much. It was very nice. It was very elaborative discussion, sir. Thank you so much, sir, for sparing your precious time and sharing your expertise with the participants. You have very intelligently discussed the national education policy, its inception, its framing, the challenges that we have to face in its implementation in higher education. You have also suggested the ways for successful implementation. Thank you so much, sir. Now I take it my prime privilege to welcome the chief guest of the valedictory session, Professor J.P. Pachal. He is having 37 years research experience and 40 years teaching experience to his credit. He is proud recipient of Professor L.P. Vidyarthi Award. He is author of 4 books and 6 reports and 55 research papers. His list of achievements is so long, but because of the scarcity of time, I just most humbly invite Chief Guest Professor J.P. Pachauri ji for the valedictory address. Over to Professor Saab. Thank you, Dr. Tripta ji. Honorable Principal of the College, and the main speaker, just I was listening him, Professor Saxena, and all the other participants. I'm sorry, actually, I was not able to join earlier, but I was having some other, some engagements. Just I returned back from my university and I was just thinking, oh, yes, I have to join. So immediately I just last part of the Professor Saxena's lecture I was listening. I don't want to make any comment about Professor Saxena's lecture. He has already elaborated all the things very analytically, and he has also mentioned a lot of challenges the university has to face while implementing this policy. So I will not say anything about that. Already he has explained all these things. Just I want to mention few things actually. That's general comments about this national education policy. This national education policy, in my opinion, has 3 characteristics. Okay, only 3 characteristics. I will mention that. First is universalization of education. Second is vocationalization of education. And third is specialization of education. And another most important part of this policy is that the main emphasis is on Indianness. भारतीयता की जो बात की गई है इसमें, they are always talking about Indianness की बात है, and the instructions will be provided to their mother tongue. मातृभाषा की बात की गई है इसमें. जो आप शुरू में अगर आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो you will see that these 2 important things are mentioned in that. और इसमें आप देखिए जो aims of this higher education policy is that ultimate aim is that how to develop our nation, development of the nation. Second is to give the proper direction to the social change in the society. And third is to strengthen the economy of the society, economic structure of the society. And fourth is per capita income. We have to increase the per capita income. And how we can extend the education. And why these 3 things are important for me? Universalization, vocationalization, and third is specialization. Universal education means now at present we are not able to provide the education to all. Why it is so? Because we have to analyze the present situation in the country. Overall, if you will see, the dropout rate is very high. Girls' education is very less. And education to the marginalized section is very less. That's why they are talking about universalization of education. Second is vocation key. They are talking about the vocation. How they can link this education with they want to provide the skill-oriented education. The main emphasis
about this. Earlier also actually vocational education was also started actually when the Rajiv Gandhi was the Prime Minister, and what has been done, what has happened actually through that vocational education, I don't want to make any comment actually on that. And third one is that is the specialization. Specialization is directly concerned or directly related to the higher education. The main emphasis is that we have to prepare we have to prepare the experts in different fields. They should be specialized persons. So how we can do that? How can we, a specialized person, a person who is very expert in their particular field? How we can do that? So you see, the main emphasis is on teacher education. As rightly he was pointing out, about Professor Saxena was saying that yes, teacher education is very important. But we have to analyze the present situation also. What type we are having, you see, different type of universities are there. We are having central universities. We are having private universities. We are having state state universities. We are having deemed to be universities. Different at the same time, we are having different type of colleges also. We have to think about the situation, what type of infrastructure at present we are having in different universities or different colleges. We have to analyze that also. The situation which, because I have visited most of the part of the country as a NEP tier in the NEP peer team. So I have seen almost all the countries. I have visited more than 110 universities and colleges all over the country. So I know the situation, what type of situation we are having. Are we in position to implement this position? There are certain colleges, I have seen government colleges are there. One teacher is there in one subject. In some colleges, in government colleges, teachers are not even there. Only guest faculty is there. Payment system is not proper. And you see, even in the central universities also, I know that 50% seats are vacant. I was associated with the BHU also last 3 years. I was visitor nominee there. We have seen that 1,000 positions were vacant. And with the help of that, at that time, Vice Chancellor, we were able to fill those positions around about 50%. Still the positions are vacant in most of the universities. So one part is the appointment of the teachers, quality of teachers, training of the teachers. This is very important. So for implementing any policy, earlier policy was not trying. They are saying that they are interested for the provide. They want to provide the quality education, right? It means we are not having quality education. Whatever we are providing, or earlier also we were not having the quality education. Quality education was that time also, this time also. Ultimately, how we can do that? How we can implement this policy? So there are a lot of challenges actually in the present situation, because different geographical situations are there. We are having different type of areas also there. Different type of universities are there. Different type of colleges are there. So a lot of challenges we have to face. I know that in Uttarakhand, till now, in this state, we are not able to implement this policy, because we are facing a lot of problems. The core committee is there. They are working on that, and they are trying how we can implement this policy. So that one is policy is very good document. Fine, it's very good document. Another part also, actually, I would like to mention that how you can increase the universalization of education. Actually, for that, nobody actually is talking about that. There is a one word. They are going to appoint social workers to motivate, to encourage the marginalized section of the society, that they have to minimize the dropout rate. So social workers, and they have to, the government has mentioned that support system has to be created at the grassroots level also. So some ways they have to prepare, and they have mentioned that literate people in the village or the government employees, retired people, and well-trained social workers, they will help. They will help to motivate our marginalized groups, our parents, those who are not able to send their children for the education. We have to think about that also, what type of situation we are having. So very, very difficult. It will be very difficult. I can't say that it will not be possible, but very difficult. We have to think about, we have to give some incentives, some financial help to other colleges also, those who are not in position to develop their infrastructure or creation of the post.
And teachers' quality is also very important. You see, teachers' training is important. Teachers' quality is very important. And for that, I'm sorry to say that nowadays, actually, teacher is a person actually who creates the knowledge. Teachers are the creator of the knowledge. They disseminate the knowledge. Okay, they are the storehouse of the knowledge. I am very sorry to inform you that in most of the colleges and universities, people are not getting the minimum wages. A person who is having the PhD, a person who is having, you see, the highest degree, they are getting only in some of the colleges 15,000, in some of the universities even 24,000, 25,000. Even I have seen actually in some of the states, they are paying only by 250 rupees per hour. So this type of situation is there. How we can do that? How we can control that? How we can minimize that? How you can think about a person who is not well paid? How you can ask him to devote his time for the implementation of this policy to organize? And she is very active actually in that way. All the time she is busy in organizing different type of activities, sometime on research methodology, sometime on, you see, higher education policy, sometime, every time she is always busy, particularly in a month, she is having that capacity to organize more than 3-4 programs in a month. So that is also a learning experience to all those persons who are young faculty, particularly for me also. I don't feel myself too much of competent, but I'm always trying to join with her whenever she called me. So really, I congratulate you for organizing such type of a very good program. It was really a wonderful program. And all the participants, those who were joined, those who were associated with this, your 1 week program, definitely, they might have definitely be benefited. Thank you very much, Professor Tripta ji, for organizing this program. And we hope, and I'm sure that by this type of organizing such type of activities, our faculty, our research scholars, they will come to know, because most of the teachers, most of the persons have not gone completely about this education policy. That is actually a very roundabout 257 pages document is there. So we have to see that ultimately for higher education also, where you will get the students ultimately. You will get the students from the grassroots level, and what type of level is there. We have to see that. So all these things, all these challenges are there, and I'm sure that we will able to cope up with the situation. We will try to. So no one is. Yes, be brief. Aarti, please be brief. Okay, because it's already 6:18. Okay. Ma'am, I will not take much time. Fine, go ahead. Because I don't have much points to say. Well, sir ने बहुत अच्छा बोला. मैम इको आ रहा है. Okay. बंद करवा दी. Yes. यूनिवर्सलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, वो सब बात समझ में आ रही है. व्हाट आई पर्सनली फील इज कि 2 दशक हो गए हैं. इट हैव बीन मोर देन 2 decades एंड वी एक्चुअली नीड दैट चेंज. हमारे पढ़े हुए बच्चे, सारे बच्चे, मतलब कुछ तो जो क्रीम लेवल के बच्चे हैं, दे गो अप, दे डू वेल, बट मैम व्हाट अबाउट द एवरेज एंड द बिलो एवरेज चाइल्ड. सर ने मनोज सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें काफी सारी बताई हमें, जो मैंने आज पहली बार ही सुनी है कि तीसरे साल में 7.5 CGPA लाएंगे तो ही रिसर्च और ऑनर्स हम रिसर्च वाली फील्ड में जा पाएंगे. अदरवाइज व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्राउड मैम, जो नीचे जो रह जाएंगे, वो व्हाट दे विल डू. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन. आई हैव मेनी क्वेरीज. आई नो बट टाइम, जनरेशन बोले, हर चीज में टीचर्स, स्टूडेंट्स, आवर सोसाइटी, आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग विल चेंज. But I know the way is difficult. रास्ता मुश्किल है. Implementation will take a lot of time, energy, सबका support. Infrastructure wise भी देखे तो obviously government has to have, they have to, do everything. मैम प्लानिंग वगैरह सब वहीं से ऊपर से ही आना है. But what we need is as you all are teacher, we are students, we can do our job. थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो we may help a little, we may contribute a little in this, ये जो अभी ये flow शुरू हुआ है,
तो उसमें हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बट आई फील ये बहुत जरूरी और सही चीज हुई है, थोड़ी लेट हुई है तो हम आधा अधूरा हमारे पास आता है, तो जस्ट प्लीज गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट नाउ फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स ओवर टू डॉक्टर राखी. Thank you, ma'am. Really, it was a very nice session. We get an opportunity to learn from not only one from three, but from three resource persons simultaneously. So, thanks to all the resource persons and all the participants. Now, to conclude or to end the session, I'll request Mrs. Amandeep Kaur for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Everyone. हाँ राखी कुछ कह रहे थे? We should leave. Thank you. We all. Yes. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you to all. Thank you, teachers. Thank you. Thank you and congratulations to Lopon College